ये तय किया कि पूरे देश में भ्रमण करते हुए 75 दिन यानी प्रत्येक शहर में 3 दिन का आयोजन हम करते रहेंगे। और ये आज संपन्न होने वाला दिन है, यानी 75वां दिन है जो गोवा में हम समापन कर रहे हैं। आरंभ हमने दिल्ली से किया था और देश के विभिन्न शहर, इम्फॉल में, दक्षिण चेन्नई में, भोपाल में, इस तरह अनेक शहर हैं जहां हम पहुंच सके हैं। हर शहर पहुंचना संभव भी नहीं था, बड़ा कठिन था। हालांकि इस 75 दिन की यात्रा में जितने शहरों तक हम पहुंचे हैं वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन संगीत नाटक अकादमी ने ये चुनौती स्वीकार की और हर नगर तक पहुंचने की कोशिश की है। उद्देश्य ये है कि हर शहर जब हम पहुंचते हैं तो पूरे देश के कलाकारों को आमंत्रित करते हैं। दक्षिण के कलाकार उत्तर पहुंच जाते हैं, उत्तर के कलाकार दक्षिण, इस तरह पूरब पश्चिम चारों दिशाओं के कलाकार पूरे देश में भ्रमण करते हैं। और वहाँ के नागरिकों, वहाँ के कला प्रेमियों के लिए अवसर होता है कि बिना कहीं भ्रमण किए हुए दूरस्थ के कला और कलाकारों से भेंट हो, उनकी कलाओं का दर्शन हो, उसका आनंद उठा सकें और देख सकें कि कितना सुंदर है हमारा देश। और विशेष रूप से तो जो लोक कलाएं हैं अद्भुत हैं। अभी कल गुजरात के जूनागढ़ से जनजातीय कलाकार आए थे और उन्होंने ऐसा अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया, अचंभित कर दिया कि ऐसा भी होता है। और उनके करतब उस नृत्य में आश्चर्यजनक थे। नारियल उछालकर सर पर गिरते हुए नारियल को तोड़ना सिर्फ एक कलाकार नहीं, सारे कलाकारों ने ये अद्भुत क्रीड़ा की थी। तो ऐसा कुछ पूरे देश में होता रहता है। आप पूर्वांचल में जाएं, असम, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ के कलाकार अपने ढंग से, वहाँ की संस्कृतियों में बड़ी विभिन्नता है और विविधता है। वहाँ के कलाकारों के बारे में हम जानते नहीं। दक्षिण में कितना कुछ शास्त्रीय स्तर पर किया जा रहा है। देश के अनेक विद्वान हैं, तो हमने ये चाहा था कि विद्वान एकत्रित हों। कल सुबह भी हमने संस्कृत विषय पर, संस्कृत के विद्वानों के विषय पर चर्चा हमने की। और आज का विषय जो हमने चुना है कि जो कला होती है, प्रस्तुति जिसकी होती है, वो प्रस्तुति, एक बार मैं एक छोटी सी घटना बता दूं। पंडित रविशंकर जी ने बताया कि कलाकार जब मंच पर प्रस्तुत करता है, ऑडिटोरियम में बैठे 400-500 लोग देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं और 5-10 लोगों से चर्चाएं करते हैं तो 5000 लोगों तक इसकी चर्चा हो पाती है। अगर मीडिया हमारे साथ खड़ी हो जाए तो ये चर्चा 5 लाख लोगों तक पहुंचती है। इसलिए शास्त्रीय संगीत के विधा में मीडिया इतना सशक्त है और आज प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतने सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ा है। हम इस माध्यम से जुड़कर अपनी कला को, जो कलाओं से अनजान है, अनभिज्ञ है, उन तक पहुंचा सकते हैं। जब कला हर तक पहुंचेगी, मैं हर दिन एक वाक्य दोहराता हूं, आज भी दोहराऊंगा उस वाक्य को, कि जो समाज में विषमताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, द्वेष है, कला है, संघर्ष है, यानी विश्व स्तर पर देखें तो आग लगी है और आग को आप आग से नहीं बुझा सकते हैं, आग को पानी से बुझा सकते हैं। और ये पानी सिर्फ कला और संगीत है। इसके माध्यम से हम शांति ला सकते हैं और देश में प्रगति ला सकते हैं, क्योंकि संगीत और कलाएं हमारी चेतना को जागृत करती हैं। जब हमारी चेतना जागृत होगी, फिर कुछ और आवश्यकता नहीं होगी। जीने के सारे आयाम, सारे दरवाजे खुल जाएंगे और हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो मित्रों, आज कला विषय पर जो समीक्षाएं होती हैं, जो कला की पत्रकारिता है, थोड़ा सा मैं अपना भी अनुभव बता दूं कि मैंने काफ़ी कुछ लिखा था, लेकिन सिर्फ सूचनाएं लिखी जाती रही थीं। विडंबना ये है कि कला क्या है, उसमें क्या हो रहा है, दोष उनका नहीं है। वो राजनीतिक बीट के पत्रकार होते हैं, उन्हें कला बीट पर भेज दिया जाता है और सूचनाएं पत्रों में छप जाती हैं। बड़ा दुखद होता है, उसकी संवेदना, कला की भावना पाठकों तक या दर्शकों तक पहुंच नहीं पाती है। तो आज इस व्यथा को लेकर, इस भावना को लेकर, इस पर हम विवेचना करेंगे, इस पर बात करेंगे और जो निष्कर्ष निकलेगा, मुझे लगता है मीडिया तक भी पहुँचे और जो इस
विधा से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी पहुँचे। और हमसे आज यहाँ संगीत के, कला के अनेक विद्यार्थी हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ऑनलाइन भी बहुत से दर्शक और सब जुड़े हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ अनेक विद्वज्जन पधारे हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्रीमती आनंदा शंकर जयंत, मैं सबसे पहले आज के आयोजन की अध्यक्षता करने के लिए आपके तालियों के साथ आमंत्रित करता हूँ। मंच पर आएँ और आसन ग्रहण करें। जनार्दन वेरलेकर जी अभी ट्रैफिक में हैं, उन्हें थोड़ा विलंब होगा। प्रोफेसर डॉक्टर मंगेश बंसोड़ जी से मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर आएँ। संदीप सोपारकर जी मंच पर आने की कृपा करें। विनायक खेड़ेकर जी से मेरा निवेदन है, मंच की शोभा बढ़ाएं। आइए, स्वागत है आपका। एमिनेंट स्कॉलर पियाल भट्टाचार्य हमारे सामने बैठे हैं, बड़ी गंभीर मुद्रा में है। मैं निवेदन करता हूं मुस्कुराते हुए आएं और हमारे जितने विद्वज्जन मंच पर हैं उन्हें अंग वस्त्रम भेंट करके उनका सम्मान करें। ये सम्मान हमारे गोवा के साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार सभी की ओर से है। ये सम्मान श्रीमती आनंदा शंकर जयंत, डॉक्टर मंगेश बंसोड़ जी, संदीप सोपारकर जी, विनायक खेड़ेकर जी, पियालदा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आसन ग्रहण करें। अब मैं श्रीमती रीटा स्वामी से निवेदन करूंगा, उप सचिव संगीत नाटक अकादमी, औपचारिक रूप से आप सभी का स्वागत करें। आज के विषय के बारे में कुछ कहें। नमस्कार। संगीत नाटक अकादमी व डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर कला अकादमी गोवा के कोलैबोरेशन में हमने ये 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ दीनानाथ मंगेशकर जी ऑडिटोरियम में। और हमारा ये सौभाग्य है कि इस मॉर्निंग सेशन वर्कशॉप ऑन आर्ट क्रिटिक, कला समीक्षा के इस सत्र में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आनंदा मैम, सोपारकर सर, खेड़ेकर सर एंड प्रोफेसर मंगेश जी और जनार्दन सर अभी शॉर्टली he'll join, he is in traffic. So we hearty welcome all of you for this session. Since this session is very relevant, we talk about performing arts, but an impact of that performing arts, the art of criticism and appreciation, which actually last and leave an impact on art fraternity and audience in general. So keeping this views for the posterity, how our art is affecting the society and how we are all the part of that society, helps and keep this the momentum of the art in real sense. Since our mandate of Sangeet Natak Academy is preserving the art, promoting and propagating the art, so this session is quite relevant because that will help all these 3 components, preservation, promotion and propagation, in real sense. When we talk about the criticism of art, appreciation of art, जब हम कला की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस अनुभवों को कुछ पत्रकारिता में कुछ उनके संभावनाएं, कंपोनेंट्स रह जाते हैं, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ बहुत एमिनेंट लोग जुड़े हैं जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत सुंदर लिखा और बहुत अच्छा जिया है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हम सब, मैं विशेष रूप से एक विद्यार्थी की तरह इस सत्र को अटेंड करूँगी और इससे लाभान्वित होने का हम सब प्रयास करेंगे। अंत में आप सबके कुछ भी प्रश्न होंगे, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, द ऑल दोज हु हैव आर रियली पार्ट ऑफ द ऑनलाइन session also, they can also ask questions, and students around here also may ask any question. So over to sir, and heartiest welcome once again to all our members and to all the esteemed audience also. Thank you so very much. बहुत बहुत धन्यवाद रीटा जी, आप इतना बढ़िया बोल रही हैं
और इतने संक्षेप में अपनी बात कह के गई, लगता है और कुछ कहती तो और विस्तार होता। बहुत बहुत धन्यवाद रीटा जी। मैं जो हमारे विद्वज्जन मंच पर हैं, मैं उनका प्रत्येक परिचय कराते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि आज के इस विषय पर प्रकाश डालें। और हमारे लिए सुंदर अवसर है, जब वक्ता अपनी बात रख लें तो आप सभी के पास ये अवसर होगा कि आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मंगेश बंसोड़ जी, मराठी फोक थिएटर तमाशा में आपने पीएचडी की है, ड्रामेटिक्स में डिप्लोमा किया है और थिएटर आर्ट्स में प्रोफेसर हैं। आपके मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थियों ने रिसर्च किया। आप रिसर्च गाइड की हैसियत से बहुत लोकप्रिय हैं। फिल्मों में, ड्रामा में आपने अभिनय किया है, नाटकों का निर्देशन किया है, नाटक प्रस्तुत किए हैं, धारावाहिक और डॉक्यूमेंट्रीज आपने बनाई है, उसमें अभिनय किया है। आपकी कविताओं और नाटक के पुस्तकें प्रकाशित हैं। अनेक पुरस्कारों से आप विभूषित हैं और सम्मानित हैं। परिचय असल में मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम ये हो जाता है, आप सभी के बारे में जो मंच पर विद्वान बैठे हुए हैं, इतना विराट व्यक्तित्व है और इतना कुछ अर्जित किया है। अगर आपके बारे में कहना शुरू करूं तो एक पूरा सेशन हो जाएगा। तो मेरे पास शब्द बहुत छोटे छोटे हैं। मैं छोटे छोटे शब्दों से इतने बड़े लोगों का परिचय कराते हुए आमंत्रित करना चाहता हूं कि आज के विषय पर प्रकाश डालें। प्रोफेसर डॉक्टर मंगेश बंसोड़ जी, आज का विषय जैसे आपको अवगत है, आप इस पर कहें। Excuse me, I'll take over if you'd allow me to जी प्लीज। to chair the session. So thank you very much. Thank you very much. So Dr. Mangesh, Sandeep Saparkar ji, and आप हैं Skedekar ji. Thank you very much, Rita, for having Sangeet Natak Academy for inviting us here. So what I would like to do is, because this is almost the 74th or 75th session, and we've already discussed in every city criticism, it's something that bothers. Thank you very much. I'll take over, thanks. We've discussed this in almost every city. So I think I'd like to change the pattern a bit rather than 20 minutes that you mentioned, Rita. So what I'd like to do is to throw questions to each of the members and have them respond to different ideas. And then at the end of the day, because the essence of the problem we all know, essence of the issue we all know, so there's no point in going there, right? I hope that's fine with everyone. So the question, I will start with you, Dr. Mangesh, is today, in today's day and age, anybody and everybody will comment on anything and everything. Everybody is a critic. Whether you're trained or not, whether you like it or not, whether they like you or not, most probably they don't. So in this scenario, who is a critic? Can you please answer that? So who would you, in today's day and age, where we have, the background is this, that we have come far away from those days when print media had spaces, had writing spaces. Today, of course, Sandeep has a column. There are spaces for some artists, writers who write in the newspapers and in the digital space. But to a large extent, we have lost those spaces. The artistic space is lost for criticism. It's mostly taken over by film. The traditional classical music, folk, that space to review has been reduced. And we have moved to the digital space where it's democratized. Anybody can comment on anything. And hence, my question, the first question would be, in today's understanding, who or how would you define a critic? Mangesh ji. Just quick answers so that we can keep the discussion going. आवाज आ रही है ना? हाँ. यहाँ पे कला और समीक्षा के बारे में बात हो रही है और इसलिए मैडम ने जो सवाल किया है कि कौन इस तरह से क्रिटिक हो सकता है, समीक्षक हो सकता है, तो कला समीक्षक के हिसाब से मैं कहूँगा कि कला समीक्षक वो है कि जो किसी भी कला को अच्छी तरह से समझे, सबसे पहले उस विधा के बारे में समझे, उस विधा की जानकारी उसको हो और वो चिकित्सापूर्ण और तटस्थता से उस कला का, उस विधा का परीक्षण करे, विश्लेषण करे, वो सही माने में एक
कला क्रिटिक उसको कह सकते हैं, हम कला समीक्षक कह सकते हैं. So Sandeep, since you are also in the writing space, you are writing you're also an artist, and from the writing space, you also look at you have the eye on the arts. So how do you keep that distinction between you being an artist and you being a writer? So the first thing that I do is I just keep my art part of mine away when I'm writing. I remember when I started to write 22 years back on dancing. I have a dance column which is in many international and national newspapers. And when I started writing, first thing I told my pen, ए कलम मुझ पे एक एहसान कर दे जो जुबान न कह सकी वो तू बयान कर दे. So the thing which I don't want to, as an artist, sometimes you feel, oh, this was so beautiful. But sometimes the pen might say it requires improvement. Right? So I think that is most important. So we have to keep our artistic side away and we have to keep our normal mind in place when we are writing it. So that's my main thing when I'm reviewing anyone or I'm writing about any art or any show. First thing I do is I keep my personal thing away completely. Is that even possible? Very difficult, especially when you see some amazing artists, you see some great shows, and you see some amazing work that is coming up, such creative work. Especially now, itna creative work aa gaya hai that it's very difficult because your art side does take over. But it's important to keep that away, and it is very tough for me. आप बताइए कि in today's day and age, criticism को आप briefly कैसे define करेंगे? What is the definition of criticism? Criticism का जो definition है आज के दुनिया में, how will you define? अभी पूरा समझ में नहीं आया. जब क्रिटिसाइज करना किसी आर्ट कला को, तो उसको आप कैसे समझाएं? मतलब कोई सीखना चाहते हैं क्रिटिक बनने के लिए तो उनको क्या करना पड़ता है? एक दो बातें मेरी मजबूरी है. एक तो थोड़ा सुनने की भी दिक्कत है, ये पहले बताना चाहिए. और दूसरी बात ऐसी है कि इस कार्यक्रम का कैसा संयोजन हो जाएगा ये मुझे पहले पता नहीं था, नहीं तो मैंने शायद ना बोलना था. एनीवे, एक दो बातें हैं मेरे ख्याल से. मैं जब तक मैं समझ गया, अगर मैं बराबर समझ नहीं गया तो आप मुझे क्षमा कर देंगे, कि पहले तो आपको खुद को समझना चाहिए. जब समीक्षा या और कोई भी ऐसी बात आती है, आपका प्रश्न शायद मैं आंसर करना मुश्किल होगा इसीलिए क्योंकि मैं तो एक अभ्यासक हूँ अभी तक, और अभ्यासक के नाते मैं तो अभ्यास करने आया हूँ. यहाँ क्या मुझे क्या क्या मिलेगा ये मैं तो देख रहा था. और समीक्षा के बारे में आज दो तरीके की समीक्षा, दो तीन तरीके की होगी मेरे ख्याल से. एक तो खुद की समीक्षा, मैं कौन हूँ, मुझे क्या समझता है, मैं क्या समझ नहीं सकता, ये जब तक नहीं समझता तब तक कोई गड़बड़ होगी. ये एक बात है. जब आज का मीडिया क्या हुआ है, हमारे बहुत ऐसे कला प्रकार मीडिया को समझने के लिए, मीडिया के लोगों को समझने लिए वहाँ उतना जानने वाला ऐसा कोई समीक्षक या क्रिटिक है या नहीं, ये बात पहली महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से. हुआ क्या है कि कुछ प्रतियोगिता होती है तब हम कोई जानने वाले लोगों को परीक्षक के नाम बुलाते हैं, लेकिन जब तक परीक्षक को खुद ही उनका काम यानी जो कुछ सामने आ रहा है उसका पूरा परिचय उसके उसको न हो तो बाकी सब बातें मेरे ख्याल से अलग है. तो जो समीक्षक जो है, जो क्रिटिक करने वाले हैं जो हैं, उनका ट्रेनिंग कुछ होना चाहिए.
उनका तो कुछ ट्रेनिंग ऑन द जॉब ही होता है, 99% तो ऑन द जॉब ही होता है, क्योंकि जर्नलिज्म में कोर्स करने के बावजूद when they come to see a program, तो in the process of their learning, of watching, they will learn to criticize. तो आप बताइए थिएटर में how does this work out? मैं थिएटर टीचर हूँ एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी में। सो नाटक की तरफ किस नज़रिए से देखा जाता है? सबसे पहले तो जिस विधा को आपको समझना है उस विधा को देखने का एक नज़रिया तैयार होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये समझाते हैं उनको कि नाटक को किस तरह से देखा जाता है, नाटक को किस तरह से आपको समझना है। और क्रिटिसिज्म की भी बात आती है, तो जिसको भी क्रिटिसाइज करना है या समीक्षा करनी है उस नाटक की या उस विधा की, तो उस विधा के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नाटक को लेकर अगर समीक्षा की बात करें तो नाटक देखने के बाद में उस नाटक में क्या था, तो समीक्षक ने क्या देखना चाहिए और किस तरह से समीक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले तो नाटक की एक कथा वस्तु होती है, उस कथा वस्तु को हमको समझना है। नाटक का प्लॉट क्या है, नाटक की थीम क्या थी, नाटक के कैरेक्टर्स क्या थे और किस परिवेश में, किस बैकग्राउंड पे नाटक खेला जा रहा था, किस तरह से खेला गया है। फिर उसके बाद में डायरेक्टर ने क्या किया, क्योंकि नाटक तो जो लिखा जाता है वो संहिता होती है। नाटक जब पूरा होता है, जब उसका प्रयोग होता है, तो हम कहते हैं कि नाटक अभी पूरा हो गया है। तो संहिता से प्रयोग होता है जब, तो प्रयोग के बाद ही हम उस संहिता की भी समीक्षा हो सकती है नाटक में। अगर किसी ने संहिता लिखी है, उस संहिता को लेकर भी समीक्षा हो सकती है और नाटक के प्रयोग को लेकर भी समीक्षा हो सकती है। तो नाटक में वही देखा जाता है, नाटक समीक्षा में, कि कथा वस्तु, थीम, प्लॉट, कैरेक्टर्स, उस नाटक में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट है या संघर्ष किस तरह से है उसके बारे में, और नाटक का क्लाइमैक्स क्या था। और एंड में अगर हम देखेंगे तो नाटक की कॉन्टेम्परेरी वैल्यूज क्या है, आज के तारीख में समकालीन मूल्य क्या है उस नाटक का। यहाँ तक समीक्षक ने वो सारी चीज़ें नाटक को लेकर लिखनी चाहिए या ऑडियंस को बतानी चाहिए, क्योंकि समीक्षक का काम यह होता है कि अच्छी तरह से ऑडियंस तक वो बात पहुंचाए, अच्छी तरह से वो समझाए पाठक को या ऑडियंस को। तो ये काम होता है समीक्षक का या क्रिटिक का। तो क्रिटिक ने या समीक्षक ने ये बात अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करनी चाहिए पाठक को और दर्शकों को। और इसके साथ ही नाटक का परिणाम क्या रहा, नाटक क्यों ज़रूरी है करना, और इस नाटक में कमियां क्या रही, अच्छाइयाँ क्या रही। बहुत बार ये होता है कि अगर क्रिटिक अगर कमियां बताता है नाटक में, तो नाटक का डायरेक्टर हो या एक्टर हो, उनको दुख भी पहुंचता है या उनको गुस्सा भी आता है, यार ये क्रिटिक ने हमारे बारे में ऐसा लिख दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा क्रिटिक वही होता है कि जो स्पष्ट रूप से कह दे, तटस्थता से उस कलाकृति के बारे में समझाए, तो वो एक अच्छा क्रिटिक होता है। अदरवाइज बहुत से क्रिटिक ये भी होते हैं कि अच्छा बोल देते हैं और खुश करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी अच्छी समीक्षा नहीं है। समीक्षा अच्छी हुई है कि जो अच्छी भी बात बताए और जो उसमें कमियां हैं उस नाटक में, तो उसके बारे में भी बात करें, एक्टर्स के बारे में बात करें, एक्टर्स की कमी या अच्छाई के बारे में बात करें, डायरेक्टर्स की कमी या अच्छाई के बारे में, और जो भी सेट, लाइट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, जो भी थिएटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में तटस्थता से वो लिखे। तो यही नज़रिया होना चाहिए समीक्षा का, नाटक समीक्षा का, और इसी तरह से समझाया जाना चाहिए और इसी तरह से नाट्य की समीक्षा होनी चाहिए। थैंक यू। Thank you. So, throwing it to you, Sandeep, now. The question that will come from taking off from what Dr. Mangesh has said, it would be while that could be the most preferred way of looking at criticism. But tell me, how much space does one have to write all about that? The space is always a challenge. First of all, there is no space, and even little space is there, it is a challenge.
And when you're looking at, say, for you write for the world of dance, essentially. So when you're looking at dance, how do you make that distinction between the popular, the well-known name, the artist who will not brook a criticism? How will you take that when you write? And how would you look at something that's already received extraordinary response, and maybe that day that person is subpar, right? Or it could be a star. I'm throwing multiple options. Or how would you look at something that's not really the straight path and is doing something different? And how would you respond to writing in that brief space that you have, 600 words, 800 words, and bring it all out? Well, firstly, I think now in today का ज़माना में, आज के ज़माने में, dance critics are not really should be critics, because the social media space has opened up so much that people all over the world can watch your work now. You don't need a dance critic to popularize your work or to make you see it. You can post it yourself and the world can see it. So I think dance critics' jobs, as a dance critic myself, I think my job has changed. What I was doing 22 years back, I'm not doing the same thing now. I think now is the time to popularize the art. अच्छा है या बुरा है, वो लोगों को जज करना चाहिए. People watch it. अगर कुछ खराब होगा या हमारी दृष्टि में अच्छा नहीं होगा, ऑटोमेटिकली हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं हैं. आपका आर्ट शायद मुझे पसंद आए, किसी और को पसंद ना आए. Dance is very subjective. So the whole value system of criticism for dance or art, I believe, has changed. So what I try to do is I pick up, fortunately I have a column which is my own column, so I'm allowed to choose what I want to choose. So I pick up only things which I feel are different, which I feel are also new to people. कुछ ऐसे भी लोग हैं, I've written about them, who are well known and who have done some great work. So I think reaching out, keeping my own column in mind, ताकि उसमें कोई नया लड़का लड़की भी आ सके, कोई established dancer भी आ सके, कुछ नया show भी आ सके. So I need to give variety to my audiences who are reading my column. So it becomes very important that मैं जो choose करता हूँ, चाहे वो international artist choose करूँ या local Indian artist choose करूँ, I'm writing about everyone because I want to create my own dance column as a unique column which everybody can read. So वो ज़माना जब मैं लिखता था, oh, this person needs improvement or requires more training or requires more rehearsal, those words have completely gone away completely. आप देखिए शो को अपने आप और आप एज एन ऑडियंस जज करिए क्या आपको वो इंसान पसंद है या आपको वो इंसान नहीं पसंद है. हर किसी का नज़रिया जो है वो अलग हो गया है. So I cannot say that a one person Bharatanatyam is the other person should also love it. It is not necessary. So absolutely I am not here to criticize anymore. I'm here only to bring it forward to people. बाद में आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे, good. नहीं अच्छा लगे, कुछ और देखिए. Because we are reporting different things every week. I think you hit the nail on the head, Sandeep. The fact remains that, as I said earlier in the talk, anyone and everyone has the capacity and the power to comment on anyone and everyone. And being that, I'm glad that you brought this out, saying that it is not necessary. Maybe that old idea of who a critic is has changed, has shifted. And the old idea of, say, a Sunil Kothari ji or a Leela Venkatraman ji or Shanta Sarabjit Singh ji, I'm talking from the world of dance, of course, and I'm sure there are many from every other field. That has shifted because they came with the knowledge, with the basic knowledge of the arts. And today you have younger writers who are coming in, who are probably also learning the art form. And that becomes, and I'm so glad you raised this, say that, you obviously a senior artist will think twice and get rather upset. If a young callow child out of college, from his college, comes out and says, "Aapne Aramanti theek nahi kiya," so I'm going to get upset. So I think you've raised the right point of saying that criticism needn't necessarily be bringing someone down. It is about reportage. It's more about reporting the activities of art into the spaces of writing. The question here is, how do you bargain? How do you lobby for that space? For me, that is a rather bigger issue. How does academia, artists,
professors in the field, people who are in the field of administration, like Sangeet Natak Academy, how will you lobby and ensure with media houses a space for the arts? For me, that would be the greatest takeaway of the last 75 talks that has been happening in Sangeet Natak Academy. If Sangeet Natak Academy can lobby with the major houses and say, guys, every week we need this space to review an art, to review an artist, and we will look at providing you a bunch of scholars who will go and review and write. For me, that would be the biggest takeaway. Would you agree with that? I absolutely agree. And I think for me to get columns in different newspapers and magazines was a tough job before. And now it's not that much though. But I think if a government body like Sangeet Natak Academy can come up with an idea like this where they can talk to the big publications or even online publications, which are very big now, to get a column, Right. even if it is 500 words, Right. to kind of just put a couple of pictures and a little bit of what happened, I think it will really help all art forms, be it music, dancing, theatre, or anything. तो आपसे प्रश्न ये है जनाब कि ये समीक्षक का इंडिपेंडेंस कैसे रखें हम? समीक्षक क्या इंडिपेंडेंट हो भी सकता है कि नहीं? वो जरूर कैसा जरूर। होना चाहिए? जी, एक बात तो मेरे ख्याल से पहले हमें समझना चाहिए कि परफॉर्मर, टीचर एंड एक्सपर्ट, दीज आर द थ्री डिफरेंट फैकल्टीज। एक आदमी एक अच्छा परफॉर्मर शायद अच्छा गुरु नहीं हो सकेगा, एक्सपर्ट भी नहीं हो सकेगा। इसमें से एक कोई अच्छा समीक्षक भी हो तो उनका एक अलग रूप हम देख सकेंगे। लेकिन जो समीक्षा करने वाले आदमी है उनको पहले उस कला प्रकार का या उस फॉर्म का पूरी तरह से जानकारी जब हो जाती है तब ही वो अच्छी तरह समीक्षा कर सकेंगे किसी के भी। बात ऐसी है कि सिर्फ इन्होंने ये राग गाया, वो राग गाया, ऐसा हो गया, इसमें से नहीं। लेकिन थोड़ा उनको पिछले का, थोड़ा इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, आर्टिस्ट की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि दो बातें हैं कि हर एक आर्टिस्ट की, मुझे क्षमा कर देना, कि हर एक आर्टिस्ट की एक कोई मर्यादा है। वो मर्यादा को न समझ के ऐसी कुछ अगर समीक्षा हो जाए, भाई कोई भी सामान्य आदमी हमारे बिरजू महाराज के तरीके से नहीं नाचेंगे या बड़े गुलाम से नहीं गाएंगे। ये जब तक ये भी समीक्षक के ध्यान में रहना अतिशय आवश्यक है। दूसरा, जो समीक्षक के नाते आज मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो मेरे ख्याल से एक कोई ऐसे 4-5 आदमी, जो जब तक मेरी जान जाती है, जब तक मेरी बुद्धि जाती है और जब तक मैंने सुना है, तब तक ऐसे बहुत कम आदमी है जो पूरा उस कला प्रकार का पूरी जानकारी करके समीक्षा कर सकेंगे। सो समीक्षक की एक निश्चित ऐसा मेरे ख्याल से उनकी आइडेंटिटी होना चाहिए। दूसरी एक बात मुझे हमेशा मैं कहता हूँ कि जैसे कि ऐसे कला अकादमी, ऐसे जगह पर काम करने वाला आदमी, by heart he should be an artist and by brain he should be an administrator। वैसा जो समीक्षा करने वाला है तो by heart he should be an artist। वो कितने अच्छे शब्द लेके वो बताते हैं, कैसे भाषा में बताते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उनको वो जब तक उनको by heart he should not be an artist, then it will be, मैं समझ सकता हूँ वो समीक्षा अलग तरीके से होगी, समीक्षा का रूप अलग होगा।
थैंक यू, थैंक यू। तो प्रश्न ये उठता है कि द critic the person who is a critic watching dance, theatre or music, personal और professional line को कहाँ ड्रॉ करता है? तो वो ज़रूरी है कि where do you draw the line, कि कहाँ क्रॉस नहीं, जहाँ लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना हो, where is that line? And I'm sure it's individual for different artists. तो कभी कभी just to be sensational कोई लिख देते हैं, you know, they write something nasty or something बहुत ही चढ़ा देते हैं या बहुत ही नीचे कर देते हैं. So where do you draw the line? That professionalism of a critic who will be writing again about something that he or she is seeing for that 1.5 2 hours. आप शायद नहीं जानते कि वो आर्टिस्ट का प्रॉब्लम क्या था उस दिन. मे बी बच्चा का फीवर है, बट there is no reason to go there. But where do you draw the line and how far can you go, Sandeep? That's a damn difficult question you've asked me. Well, it is extremely difficult to draw that line. Because जब हम इतने अच्छे programs देखते हैं और आर्टिस्ट से बात करते हैं, मिलते हैं, interact करते हैं, not just professionally, even personally, then sometimes to criticize something of your friend is very difficult. But I think somewhere the maturity is important from both sides. And I think it's important to confide in your people. So if I'm going to write something, the best is, and if I'm going to write something negative, the best is I will speak to my artist. I will tell them that, look, this is what I think was not right, and I would like to bring it out. Are you with me? And let's be together on this, so that it doesn't come as a shock to them to read in the paper the next day, oh my God, I've been brought down. So I think it's easier if you know them as friends, and fortunately, it becomes better that way. Or the other option, which I try to do, is I don't try to get too friendly with them. I keep my professional distance. At the same time, I know them very well, but not so personal that when I have to bring something and point out some mistake, it's a bit easier for me to do that. How do you keep the independence of a critic? That's the next flow. How does a critic keep their independence? Is it even possible? Because the question is, when the critic writes something not too good, it's not liked. If the critic goes to an event, there is kharcha involved, right? The travel, the stay. Who meets that? If someone is meeting it, then how independent is the critic? And if the critic writes something wonderful, then everyone turns around and says, ये तो biodata लिख दिया, ये तो report लिख दिया, ये तो कहानी लिख दिया थिएटर में. थिएटर में क्या है इस मामले में? देखिए, पहले ही मैंने कहा था कि क्रिटिक जो भी है, थिएटर क्रिटिक को लेकर या कोई भी कला के प्रति जो क्रिटिक जो लिखता है, उससे तटस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर वो न्यूट्रल अगर नहीं रहेगा तो और बायस रहेगा तो पढ़ने वालों को भी पता चल जाता है कि ये बहुत बायस है, अच्छा है या बुरा है, जो भी लिखा है, तो बायस राइटिंग भी पता चल जाता है. क्योंकि ऑडियंस अपने आप में क्रिटिक होती है, ऑडियंस अपने आप में क्रिटिक होती है. ऑडियंस भी समझती है क्या अच्छा है, क्या कम से कम आस्वाद लेती है. जैसे कि आस्वादक समीक्षा में कहते हैं कि उस कला का आस्वाद लेना, तो आस्वाद तो सभी दर्शक जो है आस्वाद लेते हैं और समझते भी हैं. और कुछ अगर चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑडियंस नहीं समझ पाया, तो समझाने का काम क्रिटिक का होता है. तो क्रिटिक ने तटस्थ होना बहुत ज़रूरी है. हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में एक परंपरा रही है थिएटर में, जैसे कि मैं कुछ नाम गिनाऊंगा आपको कि माधव मनोहर जी हैं, प्रोफेसर पुष्पा भावे, शांता गोखले जी, ऐसे कुछ नाम हैं. काफ़ी सारे, जयंत पवार हैं, प्रशांत दड़वी है, राजीव जोशी हैं, रविंद्र पाथरे हैं जो मराठी थिएटर और मराठी थिएटर को लेकर लिखते हैं, भालचंद्र कुबल जी हैं. तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, संजय डहाड़े जी हैं. तो ये सारे लोग जो हैं, खास करके क्योंकि एक बात है कि मराठी थिएटर एक रिच थिएटर है महाराष्ट्र में, तो जितने भी प्रोडक्शंस, बहुत प्रोडक्शंस होते हैं मराठी में, और हर प्रोडक्शंस के बारे में कम से कम 2-3 पेपर में तो क्रिटिक्स लिख कर आती है समीक्षा, और उसी तरह से लिखा जाता है. क्योंकि महाराष्ट्र में ये ज़रूरी है, और लोगों को भी ये आदत हो जाती है कि लोग पहले 5-10 शो देखते नहीं हैं जब तक रिव्यू नहीं आता है, जब तक
महाराष्ट्र टाइम्स या लोक सत्ता या सकाळ या सामना जो पेपर है, उसमें जब तक नाटक का रिव्यू नहीं आता और जब तक रिव्यू वो पढ़ेंगे नहीं ये नाटक अच्छा या बुरा है, तब तक नाटक देखने नहीं जाएंगे। एक ये चीज़ है। और अगर बहुत ही अच्छा नाटक है तो एक वीक में अगर कहीं समीक्षा छपकर भी नहीं आती है तो माउथ पब्लिसिटी इतनी हो जाती है। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना ये हो गया है कि नाटक देख के लोग इमीडिएट नाटक के बारे में जो भी है अपना मत अपना मंतव्य रख देते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए या माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए तो अच्छा अगर नाटक है तो माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए लोगों तक इमीडिएटली पहुंच जाता है और लोग देखते हैं। लेकिन नाटक के जो समीक्षा जो लिखी जाती है उसका इंतज़ार करते हैं लोग और रिव्यू देख के ही रिव्यू पढ़ के ही लोग नाटक देखने के लिए जाते हैं। इसलिए मेरा बिल्कुल ही ये मानना है कि कोई समीक्षक या कोई क्रिटिक जो है उन्हें तटस्थ रहना चाहिए और बिल्कुल बायस नहीं रहना चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो बायस की मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी बताऊँगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती है कि किसी को एकदम बढ़ावा देना, किसी के बारे में बिल्कुल उसको इग्नोर कर देना, अच्छा भी है तो ये क्रिटिक जो इन चीज़ों से बचता है और तटस्थ सबको न्याय देता है, वैसे ही क्रिटिक अच्छा क्रिटिक मैं मानता हूँ। But that's the wonderful aspect of Marathi theatre, which is so robust and so much of I mean acting going on, so much of productions going on. So the ecosystem of the Marathi theatre is vibrant and robust, and I think that is the difference. So that you have a whole ecosystem of performances, of creation, of criticism, of newspaper writing. So that ecosystem is fully vibrant and alive. What about arts, dance and music? Well, I will be honest, there are some dance reporters, I won't call them critics, but because, like I said, we are not critics anymore, who take money from artists to write for them, who tell them, please give us airfare, 5-star hotel stays, and we will do a good write-up about you. So I think that is completely incorrect. From both the point of views, from the writer's point of view to ask for it, and from the artist's point of view to give it. So it's not one person's mistake. I think it's both of them who stand by this. I'll throw a spanner in the works. How does a critic survive then? I don't agree to what he said, in the sense that I don't give, nor do I allow a critic. But I'm just throwing this as a spanner in the works, just to set the cat among the pigeons, as it were. There are people who may not have the affordability of being able to travel on their own, to be able to live on their own, and have nothing else but criticism as their professional space. How do they survive? So that therein lies the dichotomy. Well, the places where we are writing for, most of them offer us remuneration to write for them. Most of the places. Is that worth it? Well, it's not. Okay. But they do. But I think it's important, and today's world, it is much easier to connect to artists. You can watch videos and review it. You can watch online stuff and review it. Everybody's online now. So I don't think the personal presence is important anymore. As a writer, there's nothing extraordinary that you're going to be. To me, I see a show every day. Sometimes 3 shows a day. So I really don't have to go somewhere to watch it. And yes, there has to be a separate eye for it to understand. Sometimes what looks on camera might not look the same on stage. That's also possible. But we must understand we are not here to set up a dance company for you. We are only here to bring out to the audience what we can watch or what you should watch. Many publications also tell us not to do a pre-publicity. So if you're coming up with a show, I cannot write about it's coming and please go and watch it, because then I'm going to get you audiences and the paper thinks it's an advertisement. So all that also happens and I'm stuck in the middle of it. So best is I will report something which has already happened. So अगर आप से 4 shows करने वाले हैं, मैं आपके 1 show के बाद reporting कर सकता हूँ, ताकि आपके बाकी शायद 3 shows भर जाएं. But I think आपके show भरना आपकी जिम्मेवारी है. आपका आर्ट आपके शो भरेगा, आपकी क्रिएटिविटी आपका शो भरेगी. मेरी रिपोर्टिंग जो है, या हम सब की आर्टिस्ट एज अ डांस रिपोर्टर्स जो हैं हम लोग हैं, हमारी रिपोर्टिंग ओनली विल ब्रिंग लाइट एंड पुट स्पॉटलाइट टू योर आर्ट, एंड यू कुड यूज दैट फॉर योर ओन पर्सनल प्रमोशंस लेटर ऑन इन लाइफ. So which basically brings me to the point of the economics of criticism.
And I think, I mean, I've served as a bureaucrat in the government of India, and hence I keep looking at these spaces. How, I mean, while it's all very romantic and nice to say, yes, I'm a critic, yes, I need to be criticized, yes, artists have to be criticized, yes, it's important. We don't have paper, I mean, from whatever we've discussed, there is very little space, and of course, very little money in it. So now the next question that I want to throw to, I mean, to ask all of us is, how does a critic survive? What is the economics of criticism? Is it just is it an extra job that the person does, while the main core competency or the core earning of the artist, of the writer who's a critic, comes from some other space? And will that help the critic be independent? Because I think they all go hand in glove. If there's a person, as you rightly said, who seeks money to go and write, is it because of avarice or is it because of sheer lack of any funding? So these are questions that I think we as a community need to look at. I mean, it's easy to talk down and say, hey, तुमको पूछना नहीं चाहिए, तुमको ticket लेना नहीं चाहिए, तुमको गाड़ी में आना नहीं चाहिए, but you have to write. And the writer and the newspaper gives him 500 rupees or 1,000 rupees. How does he survive? So this is a genuine question that we as a community of arts and arts administrators need to ask ourselves. One is to lobby for space, as I said earlier, lobby for space with the newspapers. Second is to raise the payment that is paid to the critic. Of course, it will not be a salary, which then brings me to the point that criticism of the arts essentially will be a part-time job. So we need to accept that, unless it is in a space like Marathi theatre, where the whole ecosystem is very well set. The newspapers are there. Every day there's a new play coming out. Every day there's activity happening. So there is an ecosystem that funds it. And I'm not even sure if it's a full-time job for critics. Probably it's not. In this scenario, we must understand that a critic will necessarily be a part-time job and hence will make you independent. If it's part-time and you're not depending on it for your dal roti, then yes, you will be independent. Do you agree with me on this? Yes. Yes. I think that like even for me, I don't earn out of my dance columns. Never for the past 22 years. I have not taken any money to write. I am fortunate enough that I come from a family that can support me and I can support myself. So my dance writing is absolutely for free. Even for the publications, I don't charge money from them and I don't take a rupee from the artist as well. I think it's very important that that is why I can say I don't want to write about you. That is why I can say that your art was not nice. That is why I can tomorrow turn around and say, this thing requires improvement, or this was absolutely fabulous and path-breaking, because I don't owe anything to anyone, neither the people I'm writing for, nor the people who I'm kind of publishing into. Yeah, but that will work only if you have an alternate profession. And that profession could be from within the arts. Like, I mean, you could be a critic, but you have the space of academia to support you and your family. And I think, or you by administration. So I think this is something that needs to go out into the space out there, especially the lot of youngsters there who are very keen to review and write because they come from the schools of journalism and art. But please be rest assured that you will need to find another job if you want to be a good independent critic. So please get that very clearly into the system, because in the present scenario, it's going to be a long haul before we have critics being paid the kind of salaries. This brings me to the next question. जी एक सेकंड मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा. हमारे एक और पार्टिसिपेंट्स आ please, चुके हैं. please. जनार्दन वेरलेकर जी पधार चुके हैं. आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं. आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं, म्यूजिक क्रिटिक हैं, बहुत सारे संस्थानों में आप अध्यक्षता कर चुके हैं और सदस्य हैं, और कला के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है. आप हमारे इस मंच पर रहें. वेलकम जनार्दन जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, आप अब तक शायद आप ऑनलाइन देख रहे थे. सो द क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू, यू आर आल्सो फ्रॉम द थिएटर स्पेस, राइट? No. Indian classical music is my subject. Acha, music. So you tell us, how is it that the music criticism क्या जगह है पेपर में लिखने के लिए?
First of all, let me apologize for the delay. It's not because of me that I'm late here. I was ready at 9:45 a.m. sharp. The taxiwala was to pick me up, but he gave me a ring at 10:15 a.m. That's the reason why I'm very late. I apologize. But during my journey, I was listening to all the learned speakers, and now ask me. Yeah, your so the question is, we were discussed about the space of criticism in theatre, which is wonderful in the Marathi theatre. We have spoken about dance. The question to you would be, Janardhanji, what is it, how important or relevant is criticism for the world of music, especially today when every possible music is available online, every possible music is available on the digital space. Is it even important to have a critic review a music program? I mean, I don't call myself a critic, but throughout my life, I have been listening to good music, the world music. And I believe that more and more you listen, you feel like expressing. And then I started writing. It will be a bit out of question, but Bansodi ji didn't mention the name of Kamlakar Nadkarni. Am I right? Because I was listening very, very carefully. I saw one drama staged in Kankauli by Nasiruddin Shah. The name of the drama was Einstein. I saw the movie. I returned to Goa from Kankauli. I wrote an article in Tarun Bharat, the leading newspaper in Goa. After writing that letter, I got a call from Mr. Kamlakar Nadkarni. And what he said, I repeat, आता मी माझी लेखणी म्यान करायला हरकत नाही एवढा तुमचा सुंदर लेख तुमचा नाही देखा. Okay, am I right? So this is how, if you have a love for music, then you go on listening, I belong to a profession of chartered accountancy. Ya eva supteshu jagarti. This is the Brahmavakya of our institution. सर्व भूतांची रात्र तो एक जागा असतो. सर्व जग जिथे झोपलेलं असतं तर तो गरुडासारखा राजवाड्याच्या सौदावरून टेहळणी करत असतो. अँड व्हॉट ही डज, त्याला आकाशातून हिंडताना गरुड पक्षाला घार दिसतो, मोठा असतो पक्षी, आणि तो पक्षी काय करतो, त्याला आपलं भक्ष दिसतं. आणि टू यूज द टर्म क्रिटिक कसा असतो, ही मेक्स ए सर्जिकल स्ट्राईक. ही कॅचेस द एसेन्स ऑफ द आर्ट. ही मेक्स अ सर्जिकल स्ट्राईक. गरुड पक्षी 180 अंशांमध्ये तो टेहळणी करतो. आर यू फाइंडिंग माय आन्सर बिट डिफरंट? बट क्रिटिसिझम इज फॉर सेल्फ प्लेजर. Abraham Lincoln has said, judge not that ye be not judged. Right. This is not my sentence. Am I right? So, when I audit a music महफिल, वहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक, वहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक करता हूँ, प्रयत्न मेरा रहता है. Okay? Because I am told in my profession, an auditor is not a bloodhound. He is a watchdog. His role is that of a watchdog. I am trying my level best to do this. And that's why I'm called a critic. Your answer was, is there any role if I don't love art? Yeah. Ultimately,
all arts are equal at the level of perfection. It's not about my sentence. Right. All arts are equal at the end. Suzanne Langer has to say, and I feel like quoting that a little. All arts, please try to understand it, all arts aspire to the condition of music. That's the glory, that's the essence of Indian classical music, according to me. That's why I write, because I feel like sharing. I feel like sharing my happiness with my co-readers. Correct, correct. My Rasikas. I'm a simple, what happens, there is let us say, let me give you an example. I will stop afterwards. Let me say, you are in pilot. How the pilot's capacity is judged. 90,000 hours of flying to his credit. In my case, there is a pilot who is experienced. So listening, you learn. And you feel like sharing it with others. That is what is, in essence, what I mean by criticism. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Wonderful, wonderful. You want to add to it? Yeah, not adding. जब आपने वेरलेकर जी ने जो उल्लेख किया तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें कमलाकर नाडकर्णी जी का भी नाम है, लेकिन नहीं सी करेक्ट सो ये फ्लो में उनका नाम छूट गया। कमलाकर नाडकर्णी जी एक महाराष्ट्र के मराठी के बहुत अच्छे थिएटर के क्रिटिक रहे हैं और महानगरीय नाटक, हाँ, उनका जो बुक है और उसमें सारे जो महानगर में जो नाटक होते हैं, जैसे मुंबई जैसे सिटी में, उन नाटकों के बारे में, क्योंकि उन्होंने सारे मराठी थिएटर के तो काफ़ी सारे नाटकों पर उन्होंने क्रिटिक किया है और उनका महानगरीय नाटक नाम का एक पुस्तक है, तो उसमें भी ये सारे नाटकों की समीक्षा आपको आप पढ़ सकते हैं। वो बाय मिस्टेक निकल गया, लेकिन मेरे लिस्ट में उनका नाम था। नो So one of the great critic in Marathi theatre, Kamlakar Nadkarni, was there. Okay, thank you. So thank you so much. The spread of what we were discussing was captured so beautifully in the last comments. I think what he very clearly and very beautifully said is, one, you have to love the art. That is the most essence पकड़ना है, अब काफी कुछ surgical strike कर दिया. One is to catch the nuss, as we said, catch the essence of the arts. And the question that we had asked earlier is, can it be trained? Can a critic be trained? And the answer he was beautifully given by saying you learn on the job, literally on the job. It's not as though you get trained, you pass an exam. Yes, you need to pass an exam, maybe your journalism papers, but to write in a newspaper or anywhere else. But to grow to be a writer, go beyond reporter, to be a writer, and to go to the next level of a critic, what you need to do is a long haul training on the job. Attend events, go to those events, learn, correct yourself, keep being corrected. Maybe a couple of artists will jhado you a bit, but nevertheless, you stay the course and then you learn. And I think that was another huge point that came out in this conversation. The last point that I would like to, we were discussing about the independence of the critic. And for me, that is an important point, because here we discussed about the financial independence of him being a chartered accountant, an academician, a dancer, and an administrator. That helps you be independent. That helps you not want to dip into the writing space for your survival. So that is a big, big takeaway, that you must find something else to ensure that you continue the space of being in the writing critical space. More importantly, learn about the art form itself, keep learning, because that is a long haul. The third most important thing is, please, the writing, the language, the grammar, all these are so important in whichever language you write, because that is what hooks the reader. I love to read Sandeep's writing. I used to love to read Leela Venkatraman's writing, because the language, the turn of phrase, whether it's English,
it becomes so exciting to read. And that becomes a very important. Today's day and age, youngsters hardly read, hardly write. They're just writing 2 lines, 3 lines, and all in that SMS format, WhatsApp format. So writing, learning to improve the writing skills. And the last question to everyone, I'm going to throw this open to everyone, is to be independent as a critic. Should a critic aspire for an award? Should a critic aspire for government awards and Sangeet Natak Academy awards? Should they even do it? And why not? I think they should, or I think they shouldn't. Sandeep, over to you. Well, I think awards, sometimes they come, they go, doesn't really matter. What's important is the joy that you have for when you write. And I heard there are a lot of people sitting here and online as well who probably want to be writing about art and dance and music and theatre. My only, I think, advice to all of you would be that don't think of awards when you start writing. You have to start enjoying what you're writing. And also, don't write immediately after you see something. Because sometimes you're so influenced by a negative thought or by a very highly positive thought. So give yourself that rest. Like they say in a relationship, जब झगड़ा होता है, तो आप एकदम से कुछ बोलिए मत, 10 काउंट करिए, बोलते हैं ना. तो सेम वे आप शाम को अगर आप शो देखते हैं वापस आके मत लिखिए. आप 1-2 दिन दीजिए चाहिए आपको, तो उसके बाद लिखिए. Every word that you write will reach out to lakhs of people, millions of people, especially if you're writing online, it'll reach millions of people now. So you have to be very, very careful of what you write and how you write. There's a very beautiful doha of Kabir Das, which he says, शब्द शब्द की बात है, शब्द का करो विचार. शब्द शब्द की बात है, शब्द का करो विचार. एक शब्द शीतल करे, एक शब्द करे वार. एक और है, goes ahead. एक शब्द सुख खान है, एक शब्द दुख राशि. एक शब्द सुख खान है, एक शब्द दुख राशि. एक शब्द बंधन जोड़े, एक शब्द दे फांसी. So be very careful, don't report immediately. Like sometimes I talk to artists and they say, can you please write about this? I said, it will come, it might take 2 months. Because I will first think, I will think lots about it, I will read, I will watch many things of the artist. If it's the first time writing about the artist, उसका पहले का काम देखूंगा, अभी का काम देखूंगा, पूछूंगा, बात करूंगा, question answer मंगाऊंगा, बहुत सोचूंगा, and then I will report. I know my reporting might go 1 month late, but I know whenever it goes out, it at least goes out not favoring anyone, not criticizing anyone, at the same time putting across what I think is right to put out. थिएटर ट्रेनिंग में जब 2 साल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें एक्टिंग, सेट, लाइट, कॉस्ट्यूम, डायरेक्शन, मेकअप, सारी चीज़ें, उसके साथ साथ नाटक का आस्वाद किस तरह से लेना है, नाटक को किस नज़रिए से देखना है, वो भी हम सिखाते हैं. और हम तो ये भी कहते हैं कि आप में से 25 स्टूडेंट्स में से मान लो कि सभी लोग एक्टर नहीं बन पाएंगे, सभी लोग डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ बनते भी नहीं हो तो भी कम से कम अच्छे दर्शक आप बन सकते हो. बढ़िया. नाटक एक देखने का एक नज़रिया आपका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तैयार हो जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मैं देख सकता हूँ, कौन सा मैंने देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए. तो एक अच्छा एक नज़रिया तैयार होना भी बहुत ज़रूरी होता है, वो थिएटर इंस्टीट्यूट में होता है. साथ ही साथ हम लोग स्टूडेंट्स को ये भी पढ़ाते हैं कि किस तरह से आस्वाद लिया जाता है, किस तरह से समीक्षा की जाती है नाटक की, और एक नज़रिया किस तरह से तैयार होना है. तो उसमें आप बायस नहीं होते हो और आपको बायस नहीं बनना है. और इस तरह से स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, और इस तरह से मैं कहता हूँ कि एक अच्छे दर्शक बनाना भी ज़रूरी होता है. क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि हमारे यहाँ पे ऑडियंस तो छोड़ दीजिए, अभी लेटेस्ट पुणे यूनिवर्सिटी में जो भी हुआ आप सबको पता है. हमारे यहाँ पे जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य प्रयोग परिनिरीक्षण मंडल ने सेंसर बोर्ड है थिएटर के स्क्रिप्ट के लिए, और अगर सेंसर स्क्रिप्ट कहीं पे परफॉर्म की जाती है तो फिर वापस एक पैरेलल सेंसरशिप कहाँ से आ जाती है, ये कहाँ से आते हैं और किसने इनको अधिकार दिया है ये पैरेलल सेंसरशिप करने का. पुणे यूनिवर्सिटी में कल परसों ललित कला केंद्र में एक नाटक जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम प्रोडक्शन था, और एग्ज़ाम प्रोडक्शन हो रहा है,
रामलीला को लेकर नाटक कर रहे थे और एक तरह से वो विडंबनात्मक नाटक था, फार्सिकल नाटक था। और उसमें नाटक के पीछे का जो नाटक होता है, जैसे कि वस्त्राहरण में भी हुआ है, मच्छिंद्र कामड़ी के नाटक में आप देख सकते हैं, तो नाटक के पीछे के नाटक में आर्टिस्ट क्या करते हैं, किस तरह से उनकी रिलेशनशिप होती है और जिस तरह से उनका व्यवहार होता है इस तरह से। लेकिन जब नाटक शुरू हो रहा है, नाटक शुरू होता है और बीच में ही उसको रोका जाता है, कम से कम आपने पूरा नाटक देखना चाहिए, बाद में चर्चा करनी चाहिए, तो इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है तो इसके लिए भी अच्छे दर्शक तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ये भी क्रिटिसिज्म का काम है, क्योंकि नहीं तो हमारे यहाँ पे तो इमीडिएट भावना भड़क जाती है किसी भी चीज़ पे। वो ज़्यादा समय नहीं लगता भावना भड़कने के लिए। हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बावजूद इसके हम लोग बंद कर देंगे। तो ये भी गलत चीज़ है। इस तरह से घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए भी दर्शक जो है वो सजग होना चाहिए, और इसलिए ही क्रिटिसिज्म का काम ही ये है कि सजग दर्शक तैयार करना, क्योंकि फिर दर्शक डिसाइड करेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जो अच्छा है तो ले लो, बुरा है तो छोड़ दो। लेकिन आर्टिस्ट पे अटैक करना, नाटक को बंद करना, इस तरह की जो घटनाएं हमारे इर्द गिर्द होती है, मुझे लगता है कि ये निषेधार्य है। इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, और इसीलिए क्रिटिक का भी काम है कि अच्छे दर्शक तैयार करना। जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम है अच्छे दर्शक तैयार करना, अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करना, उसी तरह का काम क्रिटिक का भी होता है, और स्टूडेंट्स भी इसी तरह से एक अच्छे दर्शक बनते हैं। यही मुझे नमूद करना था। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you. I think what you are saying is it's important that training in the academic institutions are also training not just the actor or the director or the dancer or the musician, also training a trained eye, a trained darshak, a trained audience. But adding to your other references, I think today we are all in, we must accept that we are in a civilizational shift, and I think that has to be brought into the awareness of all of us as artists, and that is important. We cannot live in silos. For a long time, art has lived in a silo, away from the academics, away from the political, away from the economic. We live in our own little silos. And I think today that shift is happening, and hence we must be aware and be ready to accept those the silos being met, and hence the sensitivities that we are seeing today must be recognized and respected. This is my point. Would you like to add to the independence of the critic that we were talking about? We were talking, in fact, I have always held very strong belief that the awards itself, the recognition, should be not just to the main artist, the star, the singer and the dancer, or the theatre person, or the director, but should be necessarily embrace the overall support that the ecosystem gives to the main art. The ecosystem meaning the infrastructure, the people with the infrastructure, the people who support the art, like the critic. The critic is an extraordinary, important person in that ecosystem of supporting art. The writer, the scholar, the content creator, the artist developer. All these, I think, are extraordinary large ecosystem, and they're all doing it independently. They're not doing it for the money. They're doing it for the love. Like the critic, they're doing it for the love of art. They're doing it because they want to be a part of that artistic journey, not just of that single artist, but of the artistic journey of the nation. And hence, I would look at that whole ecosystem as something that needs to be recognized, needs to be rewarded in course of time, and not look at it being kept separately. It doesn't mean that it will impact the independence of the artist. Thank you. Well said. आनंदा जी, मैं मंजरी सिन्हा हूँ, मैं बोल सकती हूँ?
Oh, you, ma'am, she's here Yes, I am there. online. Oh, can you just hold for? Okay, okay, ma'am. Can you just say it briefly because there's one speaker waiting to speak. Okay, okay, I will wait. हाँ, आपके बाद मंजरी जी. A lot of youngsters are facing me right now. I'm not advising them, but I'll be saying like this. Any profession, if you aspire to be a professional, and critic is also a professional, no doubt about it. Maybe in any field of art. What is his first duty? His first duty is listen. Suno. You go on listening, you feel like writing. But then the stalwarts. Can I continue now? The stalwarts have always warned us, those who aspire to be something in life. You want to write. There is a very simple, beautiful saying. Think before you ink. What is the meaning? Think before you ink. I read and read. This is my second hobby. My first love is music. Second love is writing. Let me quote a violinist, Michel. His name is violinist Michel. These are not my words. बोलविता धनी वेगळाची त्या पद्धतीने मी सांगतो. If I do not practice for a day, I know it. If I do not practice for the second day, the critics know it. If I do not practice for the third day, the public knows it. Right. Violinist Michel. Why he has to say this? So, whenever a question is posed to me that you love recognition, you know, love publicity, you love fame, I introspect. I ask myself a question. First deserve, then desire. I'm in the process of learning, and that will continue till the end of my life. That's why I'm here today. Today is my granddaughter's 10th birthday, Vedika. She told me, where are you going? I told, I'm going in the company of learned people. So I'm here. I will tell all this happening to her. So this is my answer. I want fame. I want award. Everything I want. But first, I try to see that really, have I made a mark of something? Or simply because I'm carried away by flattery. This should not happen. Thank you. Thank you. So I think Manjari ji, you wanted to say something. We take the online link. Is this available? I think, Yes, am I audible? Yes, yes. Yes. बहुत अच्छी चर्चा चल रही है. I appreciated your statement also. और सब ने बहुत अच्छी बात कही है. पर मुझे बस एक बात कहनी थी कि दर्शक जो देखता है, समझता है, वो भी सब समझता है. हमारा कर्तव्य या हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसको बता सकें कि अगर उसको अच्छा लगा तो क्यों और अच्छा नहीं लगा तो क्यों. और हमारी कलाओं में थोड़ी बहुत विषय की जानकारी उसको सराहने के लिए भी जरूरी है. You need a little bit of initiation of the art even to appreciate it. तो मेरी सलाह ये है कि जो भी क्रिटिक के रूप में आना चाहे उसको पहले उस कला की थोड़ी बहुत खुद भी अभ्यास करना चाहिए. सुनना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है. रोज का सुनना अपने आप में एक तालीम है. लेकिन किस स्वर में, किस राग में किस स्वर का प्राबल्य है और वो नहीं लगा,
ये अगर आपकी अलग से जानकारी होगी तो आप अपने दर्शकों को बता सकेंगे कि what was missing, what was desired there, which is the cause of his not satisfied. Thank you. Thanks, Manjari ji. Thank you for that input about the necessity for a critic to be aware of the art form that they are critiquing. Obviously, that is the basic. I think that is core competency. Yes. The core competency of understanding or knowing, if not necessarily performing, but at least being aware of the art Exactly. itself is a very important aspect. And of course, the जी, next भाषा part. पे जितना अधिकार जरूरी है उतना ही विषय पर बिल्कुल भी जानकारी जरूरी बिल्कुल थैंक यू है। मंजरी ये जी मणिकांचन संयोग है, अगर आपको ज्ञान भी है और अगर आप भाषा पे अधिकार भी है। धन्यवाद। Thank you so much. And on that note, I think we've almost addressed all the aspects of art criticism. And at this point, I would like to throw open the floor for questions. If someone can moderate, or I can moderate it quickly. If you can, yeah. The first question, the hand going up. If they can, we can have some lights on the speakers. The mic can go around. Maybe. Huh. Hi, ma'am. Yes. Hi, Sandeep. Hi, everybody. You are, please. This is Ashok Bantia. I'm an actor. I'm National School of Drama graduate. I'm Banswar. Whatever. I'm very pleasantly surprised that you people watch the shows and then write. But in Hindi theatre, they call us up. The journalist calls us कि क्या है, कौन सा नाटक है, क्या कर रहे हो, बता दीजिए ना कौन कौन एक्टिंग कर रहा है इसके अंदर, प्लीज बता दीजिए ना, प्लीज बता, कौन किसने रिसर्च किया, एंड देन दे राइट इट. ये पॉइंट हमने छेड़ा ही नहीं. आई एम सो प्लेजेंटली सरप्राइज कि आप लोग देख के रिव्यू करते हैं. हिंदी थिएटर में I sometimes don't watch and write because I believe, like I was saying before, sir, is that why do we want to criticize? Why should we criticize? Yeah. आपने जो बनाया है नाटक, आप जो एक्टिंग कर रहे हैं, आप जो गाना गाते हैं, आप डांस करते हैं, आपके हिसाब से वो अच्छा है, तभी आप उसको मंच पे लाते हैं. सर मैं देखूंगा नहीं तो मैं कैसे उसकी बात करूंगा. मैं अगर गुरु हूं और अगर मेरे सामने बच्चा है तो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा उसे. मैं गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने की कोशिश कर, क्योंकि ये जो फील्ड है, जो आर्ट फील्ड है, वो गुरु और शिष्य के बीच ही जब तक तारतम्य नहीं होगा, जब तक वो ब्रीदिंग उसके थ्रू से मेरे थ्रू नहीं आएगी, यू कैन नॉट लर्न आर्ट वॉचिंग वीडियोज और सोशल मीडिया. I completely agree with you on सेम that. वे थिएटर, वो आता है एक फोटोग्राफर, शुरू होता है नाटक हमारा, फोटोग्राफर आता है भागते हुए आता है, उसको पता ही नहीं है, पहली फ्रेम देखता है, फोटो खींचता है, उसके बाद वो कहीं से लड़की. This is true of all performing arts. So Dance what maybe. to do? I mean, So you know, the परसों शो था मैम मेरा एक भोपाल के अंदर, एक भी जर्नलिस्ट देखने नहीं आया था. Questions tight. Yeah, I'm just last. वो मैं ये पूछना चाह रहा था, all these things are fine, whatever you spoken about, but I'm just talking, अगर मैं देखूंगा ही नहीं तो लिखूंगा कैसे? इसीलिए ये क्यों हो रहा है? Again, you have to go beyond. Why is this happening? And the question of why is it happening is lack of any space for the arts in the newspapers, whether it is mainstream or the digital. Even the digital spaces are very, very limited, except if you're doing your own private social media, right? Now, when they are not trained, invariably what is happening here? The writer who's writing for art is someone who's also doing political. He's also on the political beat. He's also on the sports beat, right? So he's also, ठीक है कुछ कर दो, एक हफ्ते में एक बार आता है पेपर में, अगर आ गया तो, है ना? It comes once. Right. Yeah, it comes even in the national newspapers. There's hardly any space. Yeah, So we are not questioning the root problem. The root problem is the person who's writing it. It's like, I'll tell you, give you an example. Schools में ना craft teaching होता है, craft teacher होता है. वो क्राफ्ट टीचर कोई भी बन सकता है, अंग्रेजी टीचर, हिंदी टीचर, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, पीटी टीचर, कोई भी क्राफ्ट टीचर बन सकता है. सेम इज द इश्यू विद आर्ट्स राइटिंग.
and they are untrained. And this comes to all of us also, dancers also. They say, ma'am, आपका जो biodata दीजिए, आपका जो आप पढ़ते ना पहले प्रोग्राम के पहले प्रोग्राम नोट्स दीजिए, क्रेडिट्स दीजिए, और अगले दिन जो भी मैं पढ़ी, whatever I read before, that is printed out as a review. It's not a review. It's not even a report. No, solution is we all have to lobby. The point, again and again I'm coming back, if you're not going to ask, let me finish please. If we are not going to lobby as an institutional basis, as people, as strong people in the field of the arts, as people who are there and say, guys, if you want me to buy your newspaper, you need to give art space. Look at the space given for sports. No, nowhere. Even in big cities, even national papers art is out. Same. You know, I was told once, let me share this very, very briefly. I was told once by a very senior, but a very well-known national newspaper, Madam, who reads your write-ups? Who reads? कितने लोग पढ़ते हैं? 1000 लोग पढ़ते हैं? 500 लोग पढ़ते हैं? Madam, मुझे तो sports के लिए लाखों लोग पढ़ते हैं. So why do I need to come to you? So there is an issue. I think we need to address it, and we need to subvert it in some way. Not search and not keep on looking for mainstream media to give you space. Find alternate spaces. And there's a huge, digital is a democratized space to a large extent. We need to start pushing it. There are newspapers which are coming online, which are giving extraordinary space for the arts. And I think we should all start saying, hey, this times, that times, that times, I don't want you. I'm looking at something else. I can do it digitally. Only if you, and organizations like Sangeet Natak Academy, you need to send out those letters. You need to send out, you need to not have the next meeting of the media for the criticism aspect should be with media houses. And I think that's important. You need to have a sit down with the media houses and say, come on, move it, give us space. And who else can do it but SNA? I also believe that मुझे थोड़ी एक बात कहनी है इसमें, अशोक जी की बात के लिए मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ. एक रंगकर्मी की बहुत बड़ी व्यथा होती है कि रंगकर्म एक तपस्या, एक साधना की तरह की जाती है, और वो दर्शकों तक पहुँचे, और ऐसे दर्शक जो उसे समझ सके, आनंद उठा सके और उसके संदेश को फॉलो करें और वो संदेश समाज तक पहुँचे. ये बहुत बड़ी व्यथा है. मैं मुंबई में पिछले 10-15 वर्षों तक लगातार हिंदी नाटकों पर सभी जितने भी नाटक हुए मैंने समीक्षा लिखी, और मेरी समीक्षा लिखी हुई उसकी कटिंग पृथ्वी थिएटर में हमेशा लगाई जाती रही है. लोग पढ़ते थे, सारे रंगकर्मी पढ़ते थे. मुश्किल ये है, हिंदी रंगकर्म अहिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत कम हो पाते हैं, बहुत कम शोज़ हो पाते हैं. उसके जो कलाकार हैं वो चाहते हैं हमें भी माइलेज मिले, हमें लोग देखने आएँ. मैंने एक बार एक समीक्षा एक नाटक की, नाटक बहुत ऊबड़ खाबड़ था, मैंने उसकी नकारात्मक समीक्षा लिख दी. जब वो निर्देशक दोबारा मुझसे मिले तो मिलते ही उन्होंने कहा कि आपने ऐसा लिख दिया तो मेरा शो बंद हो जाएगा. ये हिंदी नाटकों की अपनी अलग समस्या है कि आपने सत्य लिखा तो नाटक बंद, कैसे दर्शक पहुंचेंगे थिएटर तक, दर्शकों का पहुंचना बंद हो जाएगा. और आपका जो प्रश्न है कि थिएटर नाटक देखे बगैर लोग लिख देते हैं, तो मीडिया में थिएटर के जानकार पत्रकार नहीं है. I think we should go to some other questions also. Yeah. You know, I also believe on one more thing here is that आज का ज़माना जो है ना बहुत अलग ज़माना है. हम डांस क्रिटिक की बात कर रहे हैं जो 15, 20, 25, 30, 40 साल पहले थे. आजकल के बच्चे जो यहाँ बैठे हैं हमारे सामने, they don't require dance critic. Absolutely. You require dance. You require an art supporter. Correct. Who will encourage you to go ahead and take it ahead. अगर आज मेरा कॉलम 5 लाख लोग पढ़ते हैं, आपका इंटरनेट से, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम से लाखों करोड़ों लोग देखेंगे. So I think you are more of a critic of your own self and a publicist for your own self than what I am. So I think today's generation, पूरा मामला जो है critic का, पूरा equation has changed. Absolutely. And I think people who like people who wish कि कोई आके लिखे, be happy कि हम लोग आपके लिए आपके शो के बारे में लिखा है, और उसको जितना प्रमोशन दिया गया, मिला नहीं मिला, it is a positive aspect. Let's not look at criticizing an aspect of art. Let's look at popularizing it and promoting it and appreciating the art form. Because शायद मुझे कुछ पसंद ना आए, पर बहुत लोगों को पसंद आएगा वो चीज़.
So who am I to turn around and say कि भाई आपका कुचिपुड़ी या कथकली या भरतनाट्यम या ballet या ballroom was not nice? I think I am here to say it was beautiful. जिसको पसंद आए देखिए, नहीं पसंद आए मत देखिए. Because I, as an artist of reporting art, I'm only bringing it out to the world and not saying this is good thing or bad thing. I think we need to give a round of applause to Sandeep on that. Because I agree with you. Yes, criticism, what we are talking about is 20-year-old. We are actually in a very dated space. The dated space being, koi humko aake dekhe, koi acha likhe, koi critic kare. Let us face the facts on the ground. People who are writing, the seniors have mostly passed on. The younger ones are really not coming into that field. And if they do, the question is, where is the economics of it? How does one fund their lives? The second thing is, where is the space to write? So these are the questions that we've been discussing. Now, what is it that we can do? Two things. One is, of course, as I say, I've been hammering since then, lobby with the media, lobby with the mainstream media to ensure that there is space for arts. Two, most importantly, each of us becomes that voice, that repeater voice for the arts. And that's what Sandeep is doing. He's becoming the repeater voice. That's what everybody, you are becoming the repeater voice so that more and more people come into the arts. Today we have gone into such a silo that the world has bypassed us. The world has bypassed the arts, at least here. So what do we do now? We break those silos, come out and embrace everything else that's happening. And the digital space is the most easiest democratized space to do that. And hence, let's not get caught in this. Yes, it is a pain. It is a pain. Somebody comes and says, "Aapka report de do, hum report de denge." वो तो रख भी नहीं पाते, वो पढ़ते भी नहीं. Half the time I don't even buy the paper to buy. अरे मेरा ही तो लिखा है वो. So that's okay. We are going through a phase, but together, let us create spaces for the arts. Let us support those who are creating artistic development, who are creating artistic spaces, who are presenting artists, whether through performance, whether through scholarship, whether through creation, whether through the arts, or whether through writing. I think for me that is a larger space. I think we can take one more question. Yeah, one more question. I think we are running short of time. Yeah, somebody has to read that. Yeah, go ahead. Can somebody give her a mic, please? Hello. Hello. Yeah, namaste, ma'am, and everybody in the jury. I'm Impana Kulkarni, a Bharatnatyam dancer and writer. I have Just two lift the mic a questions. bit. Yeah. I have two questions and one line of experience, personal experience to add. The two questions are addressed to you, sir, to what you said. No, Sandeep, sir. One was, you said that you do a lot of writing without charging. And there's a similar practice in dance as well, where we perform without charging. So what kind of precedence does that set for people who want to make it a career, be it part-time? Because all the time we are faced with people who are not charging, and here we are putting a lot of effort to write and dance. So how do you do that? The comparison is odious. Well, Just, I will charge add to you. I charge for none of my writings. Okay, so not just few, but none of them I charge for, and I'm very happy and proud about it. But I also feel if you want to dance somewhere for free, I have also danced many places for free. I think it's absolutely fine because we artists are emotional people. हम सब की भावनाएं हैं, अगर हमें लगता है हमें कुछ करना है किसी चीज के लिए, be it NGO, be it some cause or whatever, please go ahead and do it. But if you feel you want to charge somewhere, you should do that as well. If you think somebody is making money and not giving it to you, and you want to put your word forward, do that. So that's a very personal thing completely. It's also happened to me when I talk about writing. Some people have offered me that I'm going to offer you money to write, or publications have offered me to write for them as well, but saying we'll give you money, and I have told them I don't want the money. Because tomorrow, it happened before, sometime back when I just started writing, is that I was offered money. And then I was told, write positive. I was told, write about this person. And I don't want to write about the person. So what happens, when I'm a columnist, I have the right to choose what I want to write. So it becomes easy. If I take money from anybody, I will have to serve them. And if I don't take the money, that becomes easier. So my money comes from my dance, from my other work that I do, and so dance writing is a pleasure for me. So I don't charge money. And if I have to dance somewhere for free, I do that as well. I must respond to your comment on dancing because you compared apples and oranges. They're two very different aspects, right? So
but I won't go there. But coming to, I know we are out of the purview of criticism in the arts, but since you've raised a point that's really close to my heart, I'm going to respond. There has been this huge issue of dancers being asked to pay to perform. It is an issue, it is a severe issue, and if you can buck the trend, God bless you, right? But having said that, I also want to lay a caveat in front of all of you that please understand that today, in today's day and age, the classical arts, especially the classical performing arts for the young, is not a very, is not a space that funds you well. Let us call out the elephant in the room. The elephant in the room is that classical arts for young artists does not pay well. It may or may not put food on the table. Let's be very clear about it. And today, that is the situation. So what do you do? So this is your passion. Dance is something which is your life breath, right? As for all of us, it is your life breath. You want to stay with it. So what happens to most of us is somebody will come and tell you, आप तो full time नहीं हो dance में, आप कुछ और क्यों कर रहे हो? आप full time को रहना चाहिए. There's nothing called full time. Please cross them out and tell them, sorry, I'm not listening to you. Just look at him, chartered accountant, academician, bureaucrat, writer, performer, administrator, and still we are in the arts. And to me, that is important. You all must understand as youngsters that staying there, knowing the situation and whining and ranting and crying is not going to help. You're just going to make yourself very sad. Please remember that teaching is an extraordinary business model for dance. Don't deride it. Don't say ye bakwas hai. Karo. Teaching will put food on the table. If not, all of you all are extremely smart youngsters. Extremely smart. Find a job and cross-subsidize your dance. Cross-subsidize it. You know, I come from the railways, so let me give you an example from the railway space. You know, in railways, the passenger tickets have never changed for the last so many years. Wahi rehta hai. But how do you think we fund it? We fund it through our freight which keeps rising. All your passenger tickets are cross-subsidized by freight. So similarly, cross-subsidize your dance with something else, a job, you're teaching, and then you don't have to, you can turn around and say, sorry boss, I'm not going to pay and perform at all. On the contrary, you will pay someone and they will look up to you. So please change that mindset. Thank you, ma'am. Okay. My second question, I'll be very quick. Second question has been answered? Yes, thank you Okay, so great. much. One last question from someone else. No, sorry, ma'am. The second question. You was have on- another question, quickly. Yes. So when I did write about dance for a paper, we had to write about it immediately the next day. And the show would be around 8 or 9 o'clock, and we have to give in our articles before 6. That was when we would call up the artist and get the information about it and then try to write it. So we had to do that to keep the information As relevant and hot as possible. yes. As hot as But possible, then yeah. what Sir also suggested is quite nice. But then if you are able to do that, how relevant will it be? Say It a doesn't month or matter. two The later? point is, what he is doing is he has a column, and there is a difference. What you are doing is the usual, I have to put that photograph out and 100 words out or 200 words out. That is a different story. Yes, we have to, it cannot be a review then. It's just a picture, like you said. Photographer आएगा, click करेगा. इसीलिए first scene को बहुत अच्छा रखना चाहिए. इसीलिए opening scene has to be real झटाक. It has to be super. You must put almost everybody on the scene then. Then the first scene will have a lovely picture. You have a grand opening. And then that's what is happening in the newspapers. Yeah, chaliye. Last question, please. One last question. Okay, you want to take that? Online also. Yeah, please. Yeah, one last, that question online somebody is raising. Can you please identify yourself also? Can you please identify yourself? Yeah. हेलो नमस्ते Yes. Please go ahead. जी मैम मैं बाड़मेर राजस्थान से फोक आर्टिस्ट हूँ हेलो आवाज आ रही है क्या सर हाँ जी, please go ahead. जी मैम ये पूछना चाह रहा था कि हमारे जो
हमारी लोक गायकी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो हमने मतलब मेरे पूर्वजों से मैंने सीखा, मेरे दादाजी से सीखा, मेरे पिताजी भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। हमारे मतलब ऐसी परंपरागत और मांगलिक अवसरों पर हम भी हम लोग गाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो ये गायकी है, जो एक मांड गायकी है, इसको हम विदेशों में कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं? मतलब दूसरे देशों में किस प्रकार से प्रेज़ेंट करें ताकि वो आकर्षित हों और इसके प्रति इतने इच्छुक हो जाए, वो जानने के लिए इच्छुक हो जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आगे विस्तार कैसे कर सकते हैं हमारी गायकी का? हेलो? Your question is आपका music doesn't get reviewed. आपका वो question है? जी, जी, आपकी वॉइस कट रही है मैम हुकुम। आप पूछ रहे हैं अपने गायकी का विस्तार कैसे करें आप? जी, जी, हम चाहते हैं कि आगे से आगे कैसे बढ़े हम? वेल आजकल मतलब सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। आप इंस्टाग्राम पे आइए, फेसबुक पे आइए और अपने गायन को लोगों को दिखाइए, वीडियो बनाइए। आज तो हर किसी के मोबाइल फ़ोन पे वीडियोज़ हैं, डालिए और मैं बोलूँगा हर दिन में 2 बार डालिए और सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे का बेस्ट समय होता है इंस्टाग्राम के लिए। देखो So, एल्गोरिथम भी बता दिया। आप डालिए और आपको मैं लिख के देता हूँ, अगर आपका गायन अच्छा होगा, आपका कला अच्छी होगी तो दुनिया भर तक पहुँचेगी और अपने शहर से निकल के आप दुनिया भर में जाके परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। जी, जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे दादाजी भी गाते हैं, मेरे पिताजी भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। तो हमारा मतलब एक कड़ी से कड़ी उस प्रकार से गायकी का मतलब एक पूरा सिस्टम नहीं चला रहा सुनिए है। ना, मेरा सिर्फ कम्युनिटी नहीं नहीं, वो आप करता हूँ। ये जी। संजीव जी जो बताए बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आपका जो भी म्यूज़िक है, छोटा छोटा सा वीडियो बना के आप अगर यूट्यूब में, शायद यूट्यूब में है आपका, इंस्टाग्राम पे करते रहिए और तभी हो जाएगा। दैट इज बिकॉज न्यूज़पेपर्स कोई पढ़ ही नहीं रहे। कौन पढ़ रहे न्यूज़पेपर्स? मुझे, मैं तो नहीं पढ़ रही। जी मैम, उस चीज़ का इतना विस्तार नहीं है, उस चीज़ से इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिस प्रकार की हमारी कठिन और ठोस गायकी है। जो हम जिस प्रकार से हम कल्चर को संजोए रखा है, राजस्थानी कल्चर को संजोए रखा है, जिस प्रकार से पुराने से पुराने बहुत ठेठ गायकी चली आ रही है, उस नहीं, बट प्रकार आई एम से वो श्योर चीज़ें अब टूरिज्म जो और हमारे कल्चर पास डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व पड़ी है। राजस्थान शुड बी डूइंग समथिंग, है ना? आप कांटेक्ट करिए, लोगों से बात करिए, होगा पक्का मिलेगा आपको, ऐसा नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच। आप आपने ज्वाइन किया है, आपको ऑल द बेस्ट एंड बस करते रहिए मेहनत। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, चप्पू चलाए बिना नदियां पार नहीं होती। Question from the audience in the hall. Namaste. My name is Purnima. I'm an Odissi dancer. And it's an observation leading to a question. Like Sandeep ji and many of you rightly said that times are changing and so is the critique and the space of art support, not really a critique. So, I'm sorry. We read reviews of movies before going and watching the movies. We read reviews of products before buying them from Amazon and such platforms. Soon, maybe there will be a platform available to write reviews for the audiences for live performances as well. So, is this question of the whole discussion really relevant now in the near future? I think you raised a very, very interesting point. Purnima, you said your name was? Yes, Purnima. Yeah, it's very interesting because what she said is, I think it's something that is, thought-worthy. That movie देखने के लिए तो review देख के जाते हैं, वो 3 स्टार है तो 4 स्टार है तो जाएंगे, 1 स्टार है तो जाएंगे नहीं. And same is with with what you buy online, which is a good thing that it's an interesting idea to look at. That you start, but there are people who are, some online channels are doing that. They already are. Then what happens, because it's a performing art, so what happens? What is the corollary that happens? In a movie, there's a preview that happens. The critics are called, a preview happens, and then maybe there's a write-up that happens. Similarly, you will need to then factor in a preview, a closed-door preview for critics to come and watch, which I would think is very dicey. Because the first performance is always the most dangerous performance for an artist. 100 things will fail. And you don't want to call your critic on that day. So it is a little dicey, but it's a good idea. It's a good idea. No, but I also feel, being a person from the movie industry as well, that most of us go to watch a movie, like you said. I don't agree with you with the review. We go to watch because of the trailers that we like. And if somebody says, "Acha nahi hai, wo to bakwas movie hai," we still go because it's a star of who we like.
So reviews have become secondary, and let me tell you, being in the movie industry, sometimes many reviews are bought. So please don't believe in those reviews as well. Most important for you to do is gauge for yourself. आजकल की जनरेशन बहुत स्मार्ट हो गई है और आपके पास बहुत साधन है आगे बढ़ने के, अपने आप को आगे बढ़ाने के. So you don't require people to review your work. You require people to support your work. I think we should really, the idea is we have to find support for the art, support each other for the arts. And there are a whole lot of digital agencies and digital media people who are out there to support artists and to promote artists. Of course, they are expensive, but there are youngsters also coming in. So there are spaces. It's not just you who need to do it. You can do it in a professional way. It's possible. And what Sandeep is saying and what all of us are trying to say is, come out of that silo. Come out, present yourself. Your art is good. You are absolutely smart enough to be able to promote yourself and your art. Stay with the art. Figure out how to cross-subsidize your art through something else. And if the criticism happens, it happens. If it doesn't, so be it. It doesn't matter. And also, I think the criticism, you must not take it to heart. At all. Does not matter. आपके किसी ने एक ने कहा आपकी कला अच्छी नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. बहुत लोग हैं जो आपकी कला को पसंद करेंगे. अपनी कला को आगे बढ़ाइए, अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाइए, अपने एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाइए. कोई क्रिटिसाइज करने वाला होता भी है, कुछ उसका फायदा नहीं है. बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे. आप ये मत सोचिए कि एक कला को सब प्रेज कर सकते हैं. अगर 10 लोग नापसंद करेंगे तो 100 लोग उसको पसंद भी करेंगे. But also remember that if you have had a bad day, maybe that day your chauka was bad or your aramandi was bad, it's possible. You might not have been well that day, or you had your bad knee that day. But it's also possible that the critic also had a bad writing, bad hair day. Who knows? That is also possible. Unko bhi mood kharab ho jata hai. So as he said, don't take it too seriously. I know this is a different way of ending a seminar on criticism. Don't take it seriously. Yes, we will. It is an important feedback mechanism. It's an important sharing mechanism. Yeah, you can. You just say. एक मुझे 2 बातों की याद आई. राजस्थान संगीत संस्थान में जयपुर में एक नामवंत क्रिटिक, उन्होंने मुझे बताया या पूछा या कहा कि क्या मैं ऐसा कहूँ कि महाराष्ट्र के ख्याल गाने वाले लोग नाट्य संगीत की ढंग से गाते हैं. मैंने बोला ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आपने पूछा, मुझे एक प्रश्न आया मेरे सामने. क्या मैं कहूँ कि उत्तर भारत के संगीत वाले कजरी, ठुमरी, दादरा के ढंग से ख्याल गाते हैं बिना भाष्य? दूसरी बात ऐसी थी कि रणमाले ऐसा एक लोक नाट्य गोवा में है जिसका हम एक वर्कशॉप हमें बनाया 7 दिन का. उसमें ऐसा है कि ह्यूमन कर्टन के सामने सब होता है. राम कथा उसके सामने होती है. सीताहरण का जो सीन था उस वक्त वर्कशॉप में हमें क्या किया कि वो ह्यूमन कर्टन वी हैड जस्ट शिफ्टेड द हैपनिंग्स व्हाटएवर इट इज in their backside. ऐसा हमें किया. जब ये उनका कुछ परफॉर्मेंस हमें किया तो मैंने उस पर लिखा. तब 2-3 क्रिटिक ने मुझे पूछा, अरे भाई इतना अच्छा वहाँ था तो आपने क्यों नहीं लिखा उस पर? ये 2 बातें. और सबकी, आपकी आयोजकों की और आप सभी लोगों की क्षमा चाहते हुए मैं एक बात मेरे ध्यान में आई. जरूर प्रबोधन उद्बोधन तो होना ही चाहिए और हम लोग इसीलिए हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं. लेकिन जो हम यहाँ एकेडमिक डिस्कशन करते हैं तब
एक सुभाषित का ध्यान आया, यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतिमान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीय। आज जैसा हमारे मोबाइल ने कैमरा खाया, कैलकुलेटर खाया, नोटबुक, वीडियो सब कुछ खाया, वैसी आज राजनीति भी सब कुछ खा रही है। और इसी स्थिति में हमें बहुत सजग रहना चाहिए, न केवल एकेडमिक डिस्कशन करके, परंतु ये लोगों तक, सामान्य लोगों को या बाहर कैसे पहुंच जाए, ये हमें दिखना चाहिए। ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बात है। थैंक यू। धन्यवाद। I think what we're all saying together is the importance of ensuring that your art reaches people. Your art has to be supported. We have to support each other, and critics are important, but don't get too stressed about that either. And finally, of course, my request to the administration is to definitely get the media on board and lobby for spaces so that the cultural spaces, the writing for cultural spaces increases in the media houses, and that is something I want to make a request to the Sangeet Natak Academy. And support each other and support the arts. Thank you very much, Sangeet Natak Academy, Rita, Swami, and my esteemed colleagues here. Thank you very much. It's been a pleasure being here this morning. Namaste. बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, mail@sangeetnatak.gov.in पर अपने सवाल भेज सकते हैं, उसके उत्तर हम संगीत नाटक अकादमी आप तक पहुंचा देगी। कृपया फिर से नोट करें, mail@sangeetnatak.gov.in। रीटा जी से मैं निवेदन करता हूं, जनार्दन वर्लेकर जी पधारे हैं और ट्रैफिक में थे, तमाम समस्याओं के बाद पहुंच सके हैं, आपका सम्मान अंगवस्त्रम भेंट करते हुए। पूरे मंच का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा, कलम पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। जिस कलम पर अंकुश लगा वो कलम नहीं है, और जिस अंकुश को बर्दाश्त किया वो कलमकार नहीं है। लेखक के लिए पहली शर्त है अपने आत्मा के साथ ईमानदारी के साथ बैठना, आत्मा से सत्य का संवाद करना, वही लेखक है। पहले लेखक ही पत्रकार हुआ करता था, अब विधा बदली है, अब पत्रकार अलग हैं, लेखक अलग हैं। इसलिए अशोक बांटिया जी ने जो बात कही थी वो समस्या इन्हीं कारणों से आती है। पत्रकारिता एक ऐसा मीडियम है जिसमें पत्रकारों का वर्चस्व नहीं रह गया है। वो जो धन को नियंत्रित करते हैं उनका वर्चस्व है, उनके नियंत्रण से पत्रकारिता आगे बढ़ रही है। तो कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन धर्म पत्रकारिता का ये है, समीक्षकों का ये है कि जो कला के क्षेत्र में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सत्य पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता तक पहुंचाएं। जो जानते हैं उन्हें उनकी जानकारी में वृद्धि हो, और जो नहीं जानते हैं वो कला को समझें और कला का आनंद उठा सकें। हमारा ये वर्ग बढ़े, जुड़ाव बढ़े। नाटक की पीड़ा है कि नाटक देखने लोग नहीं आते हैं। नाटककार कैसे करेंगे नाटक? नृत्यकार, गायन, वादन जी ये कैसे कर पाएंगे? इसलिए आवश्यक है कि पत्रकारिता सजग रहे, ये मशाल लेकर आगे बढ़े कि हमारी कला को संवर्धित करे। आप सभी ने आज की इस आयोजन की गरिमा बढ़ाई और हमारा ज्ञानवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे दर्शक, आप यहाँ पधारे, ऑनलाइन जुड़े हुए दर्शक आए, संगीत नाटक अकादमी सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।